guys, welcome back to my channel. My name is Priyal, and after really long time, I'm back with question and answer video, and I think this is the part 5. Yeah. अगर आपने पहले के पार्ट नहीं देखे हैं, so go have a look there also after watching this video of course, because ये वाला वीडियो है ना, मैं अपने एक सब्सक्राइबर को डेडिकेट करना चाहूँगी बिकॉज शी हैज़ रिटन दोज क्वेश्चंस इन माई कमेंट सेक्शन. मेरे को लगता है 2 महीने पहले, बट सिंस मैं 2 महीने से ले ओवर एंड ऑल की वीडियोस पोस्ट करी, सो आई कुडंट पोस्ट दैट, बट मैंने सेव रखा था एंड आई रिमेंबर्ड कि मुझे डालना ही है ये बिकॉज इट वुड हेल्प माई सब्सक्राइबर्स अलॉट. क्योंकि वो क्वेश्चन उन्होंने बोला कि 3rd और 4th राउंड में काफ़ी पूछे जा रहे हैं उनके हिसाब से, बिकॉज शी माइट हैव गिवन इट राइट. So I wanted to make this whole video for that purpose only because उन्होंने जो questions दिए हैं I think that are quite important. They are very common, but yes, because they are common so they are frequently asked. समझ रहा? So I'm gonna let you know कि उस questions को आप कैसे reply करोगे. So thank you so much Paradise ने मुझे comment किया था. So thank you so much and yeah. I'm gonna start the video. Also before that, can you notice something? I have chopped my hair. Like they were way too long. तो मैंने छोटे करवा ली आज ही. ठीक है, थोड़ा सा U shape. But yeah, बहुत split end हो गए थे and 6 महीने से मैंने बाल नहीं कटाए थे. So yeah. Okay, so the first question is very interesting. It's like if you get a chance to become an animal, which animal would you be and why? So इसका मतलब है कि अगर आपको चांस मिलता है कि आप कोई एनिमल बने तो आप कौन से एनिमल होंगे एंड क्यों. ठीक है, सो मैं इसका रिप्लाई ऐसे वे में दूंगी. मतलब ऑफकोर्स इट्स लाइक बहुत कॉमन रिप्लाई होगा ये बिकॉज देर आर सो मेनी पीपल हु लव डॉग्स. ठीक है, आई एम अ बिट स्केयर ऑफ देम बट स्टिल आई लव देम बिकॉज दे आर वेरी क्यूट. सो मैं ऐसा बोलूँगी कि आई रियली एडमायर डॉग्स. दे आर वेरी ट्रस्टवर्दी एंड very joyful, trustworthy, honest, loyal pets someone can ever have. So if I get a chance I would really love to be a dog. And yeah, even if अगर कोई stray dog होता है, ठीक है, they don't know you, वो आपको जानते नहीं है, but still they approach you, right? So like they are very kind. So I really like dogs and I really am a kind person myself. So I just love dogs. Okay, so this is like just trying to combine both the things. Actually the main purpose is that only, to see your communication as well as what is your point of view. Alright, so ये है जो मैं बोलूँगी. You can say your favorite animal and I'm sure majority लोग का dogs ही है, dogs, cats and all, but कुछ के unique भी हो सकते हैं, you never know. So you can say your own personal favorite animal that you want to become. Okay, question is what is the work of attendant? Okay, so what work does a cabin attendant do? मतलब आप लोग cabin crew के इंटरव्यू के लिए गए ना, आपको पता ही नहीं है cabin crew करती क्या है, बस you know that she travels the world and this and that, but और क्या करती है. Okay, so customer service, safety, security. Of course you help your passengers to serve them the food that they like, or serving them whatever they want, serving them water, whatever it is. Like customer service itself tells you a lot. So अगर आप इतना ही बोलोगे ना, customer service, security, safety, it's more than enough. But you can just थोड़ा exaggerate करके आप बता सकते हैं कि customer service में क्या मतलब, in short जैसे मैंने आपको बताया कि serving them their favorite food or whatever. ठीक है. Question is how did you help any person that you remember last time? So I would say I helped, like someone was coming and I have held the door for them and they were like really thankful. And I know it's a very small thing, मतलब ये क्या इसमें क्या help किया आपने ना, but it does matter a lot because उन्होंने thank you बोला and पूरे दिन आप वही सोचते रहे कि मैंने ना help की, उनकी help की. So वो छोटी छोटी चीज़ें भी it matters, like for me especially. Okay, सो इफ़ आई वॉज इन दैट प्लेस और उस टाइम पे मेरे को पूछा होता तो मेरे को यही आता माइंड में, जो भी आपको लगता है यू कैन आंसर दैट कि आपने किसी एल्डरली की हेल्प की जेन्युइनली, ऐसे मत बोलना.
एंड कुछ भी मतलब एनीथिंग यू वांट. मतलब जो आपने रिसेंटली किया, छोटे से छोटी चीज़ भी दिखाती है कि एज अ हाउ यू आर एज अ पर्सन. ठीक है, कि आपको मतलब छोटी चीज़ें भी मतलब कुछ अच्छी हो जाए तो आपको पूरा दिन आपका मतलब बहुत अच्छा जाता है. मतलब यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन, सेंसिटिव एंड वेरी नाइस. व्हाट इज दैट वन थिंग दैट यू वांट टू अनडू इन योर लाइफ? ठीक है, सो आई वुड बी लाइक, बहुत चीकी है ये. ठीक है, आई वुड बी लाइक I will like to undo, like I was not grateful enough for the life that I have, and I want to undo that, and I want to be grateful, more grateful. I want to appreciate myself more. That is what I want to undo and do. How would you handle a passenger who is being rude to you? Now this is the most common question. ये तो पूछते ही हैं. ठीक है, कैसे भी घुमा घुमा के वे में पूछेंगे, बट पूछेंगे. ठीक है, so what you can say is, I won't get panicked. I'll try to handle the situation myself. If it's not happening, like if it's not happening through me, I'll let my lead know, the head know about that, and she'll try to convince the passenger. If it's not happening, आपसे अगर नहीं हो रहा है तो of course ऐसे नहीं कि यार नहीं हो रहा, आप नहीं मान रहे तो मैं क्या करूँ, छोड़, मैं भी चिल्लाती हूँ. I'll let the head person know, and she's more experienced, so she'll try to handle the situation. She'll try to calm him down. If you know, of course, it's not just about the head. She's the lead, she's the head, so she knows. It's about experience, and ना कभी कभी experience हो भी ना तब भी, if someone is being very rude to you, कभी कभी ना hurt हो जाता है बहुत बार, है ना. But you don't have to show that. I know it's very मतलब you know it's impossible sometimes, you know, because if you are sensitive as a person, then you sometimes tend to cry, or you know you can't handle this, मतलब you can't handle it, it's not in your control. बट इसका मतलब ये नहीं कि मतलब आपने यू नो उनको भी वो कर देना कि हाउ कैन यू से दिस टू मी, दिस दैट. नो, try to run. I'm really sorry, sir. I'm really apologetic. I'll try to apologize, and I'll try to maintain the situation. Like, why is he rude? He can be rude without any reason, like his mood is not good. So now, that's not your mistake. But that does not mean कि आप उससे बदतमीजी से बात करोगे, है ना. आप अपने साइड से you will try to calm the situation. Talk nicely and say that, okay sir, I'll get it for you. Or if he's saying why haven't you given me the water, just apologize. Or if without any reason he's just talking rudely, you do this, no, you do that, okay sir, yeah, that's okay sir, just talk politely, it's okay, it's okay, just say it's okay, just control. That was it. These were some questions that she had asked me, and I think that these are some of the important questions जो मुझे लगता है काफ़ी लोग को आप में से पूछे भी होंगे इसमें से. बट या, सो आई होप इट वॉज हेल्पफुल. आई नो मैंने बड़े टाइम से इन्फॉर्मेटिव वीडियो नहीं बनाया हुआ था एंड व्लॉग्स ही डाले जा रही थी. सो आई विल ट्राई टू यू नो पुट मोर इन्फॉर्मेशन, बिकॉज वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगा. व्लॉग्स तो यार एंटरटेनमेंट के लिए तो है ही, ऑफकोर्स दैट आई बी अपलोडिंग, but information भी ज़रूरी है. So I'll keep updating you guys with that. Also you can comment me down below what video you want to see specifically. I'll surely make that for you guys. And thank you so much for showing so much love. And we are almost like 3,000 subscribers. Thank you so much for sticking for too long. Thank you so much. I hope you guys stay forever. Thank you. Bye.